Hello students, greetings from Indore Public School. In the last class, we have discussed about female reproductive system. So now we know about the basic structure of male and female reproductive system both. Okay, and now we will move on to the next step in the human reproduction, that is gametogenesis, means formation of gamete. How does the male and the female gamete formed? How are they formed? Male gametes, that is the sperms, and the female gametes, that is the ovum. How are they formed? Right. So the process of formation of male and female gamete is known as gametogenesis. Okay. Now we already know that the gametes are haploid. Now haploid meaning they have the half number of chromosomes. Half the number of chromosomes are present in the gamete. Why is it so? So that the chromosome number can be maintained after fertilization. The chromosome number will become diploid and it will be the same, and so same chromosome number can be maintained. Okay. So जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसमें जो गैमीट्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. ठीक है. तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल्स में है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और फीमेल्स में है ओवरीज. तो इन दोनों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में गैमीट्स बनते हैं. टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं और ओवरीज में ओवम बनते हैं. ठीक है. जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. जेनेसिस मीन्स formation, generation, to make, right? So spermatogenesis means generation of sperms or formation of sperms. Okay, and this process begins at the puberty. After a male attains puberty, the sperm start forming. Okay, now oogenesis means formation of ovum. Okay, and it starts at embryonic stage, right? So let us first talk about spermatogenesis. Fine. What is spermatogenesis? The process of formation of haploid male gamete sperm in seminiferous tubules of testis is called spermatogenesis. जो मेल गैमीट स्पर्म को बनाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में. यू मस्ट रिकॉल दैट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द स्पर्म्स. वी हैव seen that in the sperm, in the testes, sorry, not the sperm, in the testes is divided into many testicular lobules, and each lobule bears 1 to 3 tube-like structures called seminiferous tubules. Okay, तो ये जो seminiferous tubule है उसके अंदर ही मेल गैमीट फॉर्मेशन होता है. ठीक है. जो seminiferous tubule की वॉल होती है that is lined by the germinal epithelium, right? That is lined by germinal epithelium. क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं. ठीक है. तो ये जो जर्मिनल, ये जो एपिथीलियम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, इसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं. ओके, द जर्म सेल्स विच आर क्यूबॉइडल इन स्ट्रक्चर एंड द सर्टोली सेल्स. ठीक है. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग होती है उसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स एंड द सर्टोली सेल्स. जर्म सेल्स आर ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोगोनिया. These germ cells will undergo meiotic division to form the sperms, right? And the Sertoli cells will nourish the sperm. Sertoli cells का function होता है sperms को nourish करना. ठीक है. तो जो seminiferous tubule की wall है उसमें दो टाइप के cells हैं. ओके, germ cells and the Sertoli cells. germ cells का काम है कि meiosis करना और sperms बनाना. Sertoli cells का काम है sperms को nourish करना. Fine. Now let us talk about the process of spermatogenesis. In this process spermatids are formed. Okay, then it involves three substages. The first stage is multiplication phase. Okay, now in the multiplication phase, the spermatogonia or the sperm mother cell, it undergoes repeated mitotic division and forms large number of diploid spermatogonia cells. ठीक है. जो sperm mother cells हैं कहाँ पे present है? ये
ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनमें कंटिन्यूस माइटोटिक डिविजन्स होते हैं जिससे कि ये डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो स्पर्म मदर सेल्स हैं, जो जर्म सेल्स प्रेजेंट हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लाइनिंग में, उनमें कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन होगा जिससे कि डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनेंगे। फाइन। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑलरेडी यू नो देयर आर 46 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल ऑफ ह्यूमन। तो जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनेंगे उनमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द ग्रोथ फेज, ठीक है। इन द ग्रोथ फेज द स्पर्मेटोगोनियल सेल्स ग्रो इन साइज by increasing the cytoplasm and matures to form primary spermatocyte, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? जो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया बने हैं मल्टीप्लिकेशन फेज में, उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया they will increase in size, they will collect more and more cytoplasm and they will increase in size and they will mature. This mature cell is known as primary spermatocyte. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम्स हैं? अगेन 46 है ना, डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। ये जो एडजॉइनिंग डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम विल अंडरगो माइटोटिक डिविजन्स, okay, and it will form 2n, that is diploid spermatogonia. Spermatogonia will undergo growth phase and it will form an enlarged cell. This enlarged cell is known as primary spermatocyte. Fine. Primary spermatocyte will undergo the third phase, that is a division phase, okay, in which it will undergo meiosis. The third phase, that is the maturation phase, in which the primary spermatocyte undergoes first meiosis. Last year we have already studied the meiotic cell division, right, and we have seen, we know that meiosis has two divisions. Two divisions take place in meiotic division, right. The first division is the reductional division and the second division is the equational division. Okay, so the first division occurs that results in the formation of two haploid cells, ठीक है। जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो उसमें क्या होगा? दो इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होंगे, राइट। नाउ दी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन and it will form 4 equal haploid spermatids. Fine, you can see in this diagram, right. Spermatogonium, they undergo meiosis, they undergo mitosis and form spermatogonia, which are again diploid. Some of these spermatogonia will increase in size, they will grow and they will form primary spermatocyte. Now these primary spermatocyte will undergo reduction division, meiosis first division, okay, and they will form two haploid secondary spermatocyte. Fine. These secondary spermatocyte will undergo the second meiotic division and it will form 4 spermatids. Fine. So again one more thing to remember here, that the secondary spermatocytes formed as well as the spermatids formed, they all are of equal size, right. There is no difference in the sizes of the spermatids, right. So one primary spermatocyte will lead to the formation of 4 spermatids, 4 haploid spermatids, right. Now this spermatids will undergo differentiation, means it will change the structure of the cell and it will form spermatozoa, right. So this diagram represents complete spermatogenesis, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को लाइन करते हैं, उनमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस से इट विल लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया विल फॉर्म। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें से कुछ डिफ्रेंशिएट होंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट होके वो बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस होगा उनमें, राइट। आफ्टर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन 2 secondary spermatocytes will be formed. Now these 2 secondary spermatocytes will undergo meiosis 2 and 4 equal size spermatids will be formed. Now these spermatids will undergo cell differentiation and they will form spermatozoa, ठीक है। This differentiation, this transformation of spermatids into spermatozoa is known as spermiogenesis. Spermiogenesis क्या है?
स्पर्मेटिड्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है स्पर्मेटोजोआ में और स्पर्म्स में, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ में क्या अंतर है? यू कैन सी द स्ट्रक्चर, है ना। स्पर्मेटिड्स इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल सेल, एक छोटे सर्कुलर सेल की तरह है स्पर्मेटिड, बट स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर बहुत ही स्पेसिफिक होता है, राइट। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये जो स्पर्मेटोजोआ है ये सर्टोली सेल्स में इनके हेड्स एम्बेड हो जाते हैं एंड दे द सर्टोली सेल्स नरिश देम, फाइन, एंड रिलीज देम। ठीक है, ये जो रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ है, मेच्योर स्पर्म्स है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो रिलीज होते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। ठीक है, तो स्पर्मिएशन क्या है? रिलीज ऑफ स्पर्म्स, रिलीज ऑफ मेच्योर स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एंड स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? conversion, transformation of spermatids into spermatozoa, right? So I hope you have understood all the terms, right? This process is very very important. ठीक है, this has come in the form of different diagrams to label as well as to draw, right? Especially this diagram, it has come in the previous board years, fine. Also it can be asked to write down the chromosome number of spermatogonium, spermatogonia, primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatids and spermatozoa। ठीक है, तो हमने इसमें देख लिया कि स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ आर हैप्लॉइड, फाइन। देन अगेन क्वेश्चन कैन कम, इफ देर आर 20 secondary spermatocyte, then how many spermatids or how many spermatozoa will be formed? So we can see here that each spermatocyte, each secondary spermatocyte gives rise to 2 spermatids, right? So double the number of spermatids will be formed. If there are 20 secondary spermatocytes, then 40 spermatids will be formed, fine. Then again, starting from primary spermatocyte, question can be asked that there are 20 primary spermatocytes, so how many spermatids can be formed? Now we know that each primary spermatocyte undergoes meiotic division and forms 4 haploid spermatids, right? So if there are 20 primary spermatocytes, then 20 into 4, that is 80 spermatids will be formed. Okay, so different types of questions can be asked based on this. Again, difference between spermiogenesis and spermiation was also asked one of the years. So we know that spermiogenesis is the transformation of spermatids into spermatozoa, and spermiation is a release of mature sperms. Okay, now ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, दिस इज एंटायरली कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे ही क्यों हो रहा है ये? क्योंकि इसका हार्मोनल कंट्रोल है, फाइन। तो लेट अस सी जो हार्मोनल कंट्रोल है, क्या क्या हार्मोन्स इसको अफेक्ट कर रहे हैं, फाइन। लेट अस लुक इनटू दैट। सो वी नो दैट जो हाइपोथैलेमस है, फाइन, इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस GnRH मीन्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, it will release GnRH means gonadotropin releasing hormone, right? So this gonadotropin releasing hormone is a hypothalamic hormone. This hormone will act on the anterior pituitary gland, fine. This anterior pituitary gland will release the gonadotropins. All these hormone names already we have studied last year, है ना, क्लास 11th में हमने पढ़ा है ये, ठीक है। तो GnRH पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। GnRH will stimulate anterior pituitary to release the gonadotropins. Gonadotropins क्या हैं? दो gonadotropins होते हैं, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone, right? Luteinizing hormone और follicle stimulating hormone दोनों ही anterior pituitary के hormones हैं, okay? जो luteinizing hormone है that will affect the Leydig cells, right? Leydig cells
in when we studied the male reproductive system, we have studied what is Leydig cells and where are they present. जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं, वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं लेडिक सेल्स, जो हमने पढ़ा था, जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, ठीक है. तो दोज लेडिक सेल्स विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द in response to the luteinizing hormone released by the pituitary. पिट्यूटरी के लूटिनाइजिंग हार्मोन से लेडिक सेल्स एक्टिवेट होंगे और वो एंड्रोजेंस मतलब टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेंगे. ये जो एंड्रोजेंस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्टिवेट करेंगे. ऑल्सो दे विल अफेक्ट द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स. फाइन. दूसरा गोनाडोट्रोपिन जो है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है. सर्टोली सेल्स क्या हैं? जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ में प्रेजेंट होते हैं और जो कि स्पर्म को नरिश करते हैं, ठीक है. तो सर्टोली सेल्स ऐसे फैक्टर रिलीज करेगा जो कि स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेंगे. व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ, ठीक है. तो ये इसका हार्मोनल कंट्रोल है. क्या हो रहा है हार्मोनल कंट्रोल में? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं. ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करेगा. गोनाडोट्रोपिन्स आर टू लूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. लूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो लेडिक सेल्स को इफेक्ट करेगा. लेडिक सेल्स क्या करेंगे? वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेंगे. दिस टेस्टोस्टेरोन विल stimulate the process of spermatogenesis and also will develop the secondary sexual characters. Follicle stimulating hormone सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेंगे और वो स्पर्मियोजेनेसिस को इंक्रीज करेंगे. स्पर्मियोजेनेसिस मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ. Okay, now you can see in this how spermatids get transformed into spermatozoa, ठीक है. This is a spermatid. Fine. So the nucleus of spermatid forms the acrosomal vesicle, ठीक है. एक्रोसोम जो है वो स्पर्म हेड के ऊपर होता है जिसमें कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं. गोल्जी अपैरेटस एक्रोसोम फॉर्मेशन में मदद कर रहे हैं. एज यू कैन सी ऑन द अदर साइड द सेंट्रियोल्स डेवलप, ठीक है. सो ये जो सेंट्रियोल है ये मिडिल पीस में प्रेजेंट है. जो भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में वो मिडिल पीस में अरेंज हो जा रहे हैं, ठीक है. द एक्सेस ऑफ साइटोप्लाज्म इज डीजेनरेटेड. फाइन. सेंट्रियोल विल give rise to the axial filament, fine, which will pass through the middle piece and the tail. Fine. This here in the next diagram, this diagram you can understand the structure, ठीक है. जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर एक्रोसोम प्रेजेंट है. एक्रोसोम जो है वो स्पर्म हेड है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं. देन देर इज द न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस along with the acrosome is known as the head. Fine. Then is a small neck containing the centrioles. Two centrioles are present. Then is the middle piece which contains the mitochondria, ठीक है, and then tail, right? Okay. Now let us see the let us talk about these structures and their use for the sperms. How do they help in the sperms to work? Fine. So sperm, it is surrounded, it is covered by the plasma membrane. It is 2 to 5 μm in diameter and 60 μm in length. Now sperm has 4 parts. The head consists of the elongated haploid nucleus. Fine. At the anterior end of the head there is an acrosome. Fine. This acrosome contains hydrolytic enzyme and it helps in contacting as well as penetrating the egg while fertilization. फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो एग के जो आउटर वॉल्स होते हैं उसको हाइड्रोलाइज करने में, उसको ब्रेक डाउन करने में जो एक्रोसोम है वो फंक्शनल होता है, जिससे कि वो ब्रेक डाउन हो और न्यूक्लियस उसके अंदर एंटर कर पाए, ठीक है. ये जो एक्रोसोम है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से डिराइव होता है. फाइन. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द नेक.
नेक जो है वो हेड और मिडल पीस को कनेक्ट करता है. इट इज़ वेरी स्मॉल पार्ट. फाइन. द नेक कंटेन्स टू सेंट्रियोल्स. फाइन. एक वन लाइंग बिहाइंड द अदर. लास्ट ईयर यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रियोल. ठीक है. ये जो दोनों सेंट्रियोल्स हैं ये एक दूसरे के राइट एंगल्स पे प्रेजेंट होते हैं. फाइन. जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, मतलब जो ऊपर वाला सेंट्रियोल है, ये जाइगोट के फर्स्ट क्लियवेज में इसका रोल होता है. फाइन. द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्लेज इट्स रोल during the cleavage of the zygote, first cleavage of the zygote, right. The distal centriole, it gives rise to an axial filament. ये जो axial filament है ये ट्रैवर्स करता है, ये मिडिल पीस और टेल को ट्रैवर्स करके बाहर आता है और जो स्पर्म के वाइब्रेशंस होते हैं वो वाइब्रेशंस को मॉनिटर करता है. ठीक है. Now next is the middle part. Middle part of the sperm contains large number of mitochondria. These mitochondria release energy and this energy is utilized for the movement. ठीक है. Movement of the sperm, right. The tail, it is long and slender and it vibrates continuously and helps in the movement. Fine. Okay. So this was about sperm structure. It is very important. Many a times it comes to draw the diagram and explain any part, or what is the importance of a particular part, like how is neck, what is the function of neck, what is the function of middle part, है ना, what which cell organelles are present in the middle part of the sperm, like this. Such questions can be asked, right. Okay. Now in one ejaculation around 200 to 300 million sperms are ejaculated, right. Out of that 60% sperms must have normal shape, size and motility. 40% motility should be there, otherwise these sperms are cannot undergo fertilization, है ना. For fertilization to take place 60% sperms should have normal structure as well as 40% motility, then only they can do fertilization. Fine. Okay. So now, fine. So this was about spermatogenesis, right. I hope you have understood. Go through all the screen share. Fine. Go through all the slides, see it properly. Fine. And read the portion from your textbook also. If you do not understand any part, you can contact me, you can ask me, right. So goodbye for today. Stay at home and stay safe.